आप गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉस्ट बाइट 2.0। और आज गाइस आज आज के वीडियो में हम अपनी हैंड रिटन स्टोरी टेलिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने मेरी हैंड रिटन स्टोरी मॉन्स्टर को जब यहाँ पे लास्ट एपिसोड में खत्म किया था वहीं से शुरू करने वाले हैं। और पहले से ही मैं वार्निंग देता हूँ, ये बुक वायलेंट होगी। तो ये बुक वायलेंट है तो इस पे मैंने एज रेस्ट्रिक्शन लगाई है। मतलब 18+ नहीं, पर मतलब वायलेंट रेस्ट्रिक्शन है कि छोटे बच्चे को मत दिखाओ। अगर आप 12-13+ हो, वायलेंस से आपको थोड़ा अच्छा मतलब वायलेंस से यू डोंट माइंड वायलेंस, तो ये वीडियो देखना ना, लाइक और सब्सक्राइब करके भाग जाना, क्योंकि इसके बाद की जो भी मैं वो लिखूंगा, क्या बोलते लिखूंगा क्या, जो भी मैं बोलूंगा स्टोरीज, वो इतनी वायलेंट नहीं होगी, तो चिंता मत करो। पर ये वायलेंट है तो मेक श्योर। अब आते हैं वापस अपने बुक के पास। तो मुझे याद है कि होमिली के साथ लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 और 6 पढ़ा था। तो उन दोनों के 4, 5, 6 पढ़ा था शायद। तो वो 3 में क्या हुआ था, होमिली को क्या हुआ था, कमेंट करना। और लेट्स गो अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। I was running through the speed of light. I was just devastated. It was very hard to escape from the police. I was just running. I was not seeing the way. Also, my attention was not there. Suddenly, I knocked my foot into the inner rock. I fell down on the ground. I was not able to feel anything. I knew that now the police will trap me. My eyes opened and I was in a prison with a vampire. He asked me, "Friend, vampires and Dracula never escaped from here." "Oh," I said, "I'll free you." "Let's see," he said, groaning. I was not sure if they had my sword. I was just trying to call it. I thought of a plan with my vampire buddy. "Bro," I said quietly. "What happened?" he said. "I have a plan." "What?" "Hear me out. See, I have a sword and maybe if I call it, it might come to me. So, I'll break the bars. And by the way, what pet do you have?" "A gorilla." "What?" I said, hesitating. "Mr. Gorilla. He's a spider," he said. "Okay," I said, sighing. "So I'll break the prison and can you duplicate your spiders?" "Yes," he said. "Very good. So I'll break the bars and you dupe your spiders. The spiders will distract the officers and till then we'll free the other vampire." "Absolutely," he said. I stood on the edge of the bar. I was trying to call the sword. So I stuck my hand between the bars and said in my head, "Come up, quickly." My hands were screeching up. I heard an erupted noise from the office. Something was cracking and collapsing there. I stayed calm and waited for the sword. I had some courage that the sword will come. I closed my eyes and focused deep. Was I failed? I remembered biting my brother. The van fell from the cliff. The purple shawl, the black hoodie, and in coming in here, I shouted, "Come on!" The office door cracked, and finally the sword came into my hand. My eyes glowed with joy. I slayed the bars and my vampire friend released his spider. I slayed the other bars to free the rest vampires and Dracula. तो नहीं, ये अभी चैप्टर खत्म नहीं। हाँ, तो इसमें
इसमें क्या हुआ कि वो मिली एक प्रिजन में था और वो प्रिजन में वैम्पायर और डाकुला वाली प्रिजन थी। उसका एक दोस्त था प्रिजन में, एक वैम्पायर है दोस्त। तो अब उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो इस जो प्रिजन प्रिजन के सारे वैम्पायर्स और इन सबको बाहर कैसे निकाले। तो उन्होंने वो प्लान एग्जीक्यूट किया और सारे वैम्पायर ड्रैकुला बाहर निकाल दिए होमिली ने prison से। We ran out of the prison. Now I wanted to meet Harry, so I thought to give him a gift. So I said to the vampire, Vampires, I want you. I'll take you to your real owner. Come on. All the vampires agreed. It turned into the bed and took me to Harry. I was happy to be in the sky, but they were going in the west. I thought that Harry might change his address. I flew from the hospital where I killed my brother. I set the beds to get me down. I cried there. Then I went to floor 5 in my brother's room. I got very happy after seeing him. He was alive. I went crazy. As I went to touch him, my mom yelled, Get out! I turned back. My mom was having a cross necklace. No, mom, I screamed. I saw that the left of the room there was a doctor having a syringe. He ran towards me. I ran towards the window, but but no more doctor came out of the bed and grabbed my waist. I screamed, "Help!" No one came. The doctor injected the fluid in me of the syringe. I fainted. तो होमिली, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हैरी है उसे एक वैम्पायर आदमी चाहिए, तो वो एक एंटीडोट बनाता है। फिर होमिली को वो वैम्पायर बनता है वो सब। तो होमिली सारे वैम्पायर्स को फ्री करता है, तो उसे लगता है कि हैरी को गिफ्ट देते हैं ना, क्योंकि भाई हैरी को अगर वैम्पायर आदमी चाहिए तो वैम्पायर्स को मैंने आजाद किया, तो वैम्पायर से दे दो ना उसे जो आजाद किए। तो उसने वैम्पायर्स को वहां ले जाने का सोचा, पर वो उसी हॉस्पिटल में और के ऊपर से उड़ रहा था। यहाँ पे उसने उसके भाई को गलती से मार दिया था, और मैंने लास्ट एपिसोड में स्पॉइलर भी दिया था कि उसका भाई मरा नहीं है। तो अब वो अपने भाई को मिलने जाता है, तो उसकी मम्मी उसे रोकती है और बोलती है कि तुम नहीं। और उमिली देखता है कि उसकी मम्मी के पास एक क्रॉस वाला नेकलेस होता है, जिससे वैम्पायर्स और ड्रैकुलस को डर लगता है। तो अब वो उमिली भागने की कोशिश करता है, पर एक डॉक्टर होता है इंजेक्शन की तरफ, और एक और डॉक्टर होता है इंजेक्शन से होता है उसके पास, उसकी तरफ भागता है होमिली की तरफ, और होमिली को वो इंजेक्ट करता है फ्लूइड, और होमिली बेहोश हो जाता है। तो अब होमिली के साथ क्या हुआ, लेट्स सी। When I woke up, I felt my canines are shorter. My skin is not skinnier. I was turned into a normal human. I was still on the floor. I got up and saw my brother eating food. I went near him and said, Hi, my bro. He didn't respond. I was shocked. When I touched him, he said, Oh, bloody you. He said, Bro, I am back normal. He said, Oh, I got teleported to the Kale mansion. There I saw Harry working. Finally, I met him after long days. I said, Harry, my friend. I said,
He looked at me and started to jump. He and I hugged and started to research. Harry said, "Are you normal?" "Oh yes." "Will you turn me into a vampire?" "Yes." He made a he made a chemical to turn me into a vampire. Injected it in my body. I take time. It didn't take time. It was green fluid. It seemed pretty decent. He started to bring another monster, the scout. He said, "This, this is scout. It is very amazing. It is a, it is a rainbow." He pressed another button and the scout all multiplied. "They are mostly in a group," he told me. "So why is it alone?" I asked. It is like a gloom, very strong. It does not need to be in a group," he told me smiling. He continued, "They are having very long teeth, probably more than a vampire." I said, Do they suck blood?" I asked. "Vampires and Dracula suck blood to fill their belly, means to get energy. Scouts suck blood on a rare basis, means they eat meat, and if in 24 hours they, they do not get meat, they suck blood," he told me. My real description for a scout is that he was a stunning monster. His rainbow colors were startling. His rainbow colors were pink, violet, turquoise, indigo, black, blue, lime green, and gold yellow, copper orange, and skin tone red. He had a really large head and small arms and legs. He was so cute that for 1 second I almost loved it. I started to squeak. My nerves crept over my neck. I felt my senses cold. Harry just came near me and touched my neck. He said, "Oh, don't worry." "Why shall I not worry?" I yelled. "You're turning in a vampire." I was just feeling my pain. I started to throw my arms and legs here and there on the sofa. I pressed something wrong. "अब्बा मामा, इस ये पैराग्राफ थोड़ा बहुत काइंड ऑफ अजीब ऐसा कुछ है। इसमें होमिली को जो वो डॉक्टर इंजेक्शन मारते हैं, जब होमिली जागता है तो होमिली एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो मतलब ड्रैकुला बन गया था, पर वो वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। तो अब वो जब जागता है तो वो अपने भाई के पास जाता है। उससे पहले उसका भाई कुछ कर पाए या कुछ हो पाए, हैरी उसे टेलीपोर्ट कर लेता है उसके घर के अकेले मैंशन। यहाँ पे वो दोनों रिसर्च करने लगते और उसमें हैरी होमिली को पूछता है कि क्या वो नॉर्मल बन गया है? तो होमिली बोलता है हाँ, उस होमिली को वापस वैम्पायर बनना था। तो अब हैरी ने क्या किया? हैरी ने उसे एक पोशन से इंजेक्ट किया वैम्पायर बनाने के लिए और बोला टाइम लगेगा इसमें। और जब तब तक वो और होमिली थोड़ा रिसर्च करने लग सॉरी हाँ, तो जो हैरी है वो होमिली को एक मॉन्स्टर दिखाता है, वो स्काउट के बारे में बताता है। और वो फिर होमिली को स्टार्टेड टू स्क्वीक, मतलब होमिली को कुछ होने लगता है। होमिली को, हैरी को नहीं, होमिली को। होमिली के कुछ तो मतलब उसको ठंड लग रही थी, मतलब उसको अजीब लग रहा था जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हैरी बोलता है कि चिंता मत करो, तुम वैम्पायर में बदल रहे हो। तो ये तो ठीक है, तुम वैम्पायर में बदल रहे हो। अब वो जब दर्द होता है होमिली को, तो होमिली अपने हाथ और पैर
यहाँ वहाँ जो सॉकेट है हैरी का उस पे है, यहाँ वहाँ ऐसे हाथ पैर मारने लगता है। और उस टाइम पे इमली कुछ गलत दबा देता है। और ये चैप्टर 8 इज द मेन चैप्टर। मतलब ये जो चैप्टर है इसके बाद मोस्ट ऑफ द चीजें चालू हो रही है, जो एक्चुअली बुक का जो मीनिंग है वो इस चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। I was doing something wrong. I knew that. I knew that I pressed a button, but don't know which. I got up and again fell down. I pressed the open button. Harry was yelling at me, but I was not paying attention. ओपन बटन किसे याद है? ओपन बटन क्या है? ओपन बटन जो शील्ड मॉन्स्टर्स को रोकती है अर्थ पे आने की, ओपन बटन उसे खोलता है। तो हमने उसे दबा दिया था। Monsters rushed out of the hole and started to attack us. Harry, stop them, I said, shouting. I beat the monster and he died, but my mouth got foul. The blood of that monster was green. I almost vomited but controlled myself. Harry pressed a button and a sheet on the entrance appeared. A wall from the hole to the exit was created so that the monsters can't attack it. Why you did this? He said, grunting. It was a mistake. I said, what mistake? You know that what you have done? He said, what? I asked. You created a monster apocalypse, he told me. Apocalypse? I asked. Now what? I said. It, it is your fault, he said. I accept that, but now what? I asked. We need to go to an adventure, he said. Which adventure? I asked him suspicious. We need to go to a nun's house. Actually, not a house, a graveyard. I got scared after hearing grave. I remember the game of the evil and the broken mask. In that game, we need to complete some task and escape from them. We get 3 lives to run out from them. It is real life, means hardcore, means no 3 legs, only one. I was thinking all these. It is similar to your thought, but slightly different, said Harry. He's a telepathic monster, so he read my mind. Different, I asked. Okay, I'll explain. After we press the open button, the shield breaks. And to recover it, we need a liquid. To get that liquid, we need to mix some potions. To get those potions, we need to travel in different dimensions. The nun can grant us the way. Grant us that way. But to do it, the nun gives us a challenge. It's, it's be brave or grey. Hence we need to open a tiffin with a blindfold. And the tiffin is greased by oil. And we have to use one hand or get buried, he told me. I was scared by that because it was just creepy. My evil and game was so scary. So what will happen in real life? In the game I was scared after seeing the nun and I mostly got scared and jumped from my chair to bed. Maybe in real I will get a heart attack. तो ये चैप्टर में हैरी एक्सप्लेन करता है कि अब तुमने ओपन बटन खोल दिया, शील्ड खोल दी जिससे मॉन्स्टर धरती पे आने से रुकते हैं, तो शील्ड तुमने खोल, तब क्या हुआ? अब हुआ जो शील्ड तुमने खोल दी तो
अब मॉन्स्टर बाहर आ गए वहां से। मॉन्स्टर बाहर आ गए। अब वो शीट को रिपेयर करनी है क्योंकि मॉन्स्टर अपोकलिप्स हो चुकी है। तो हैरी समझाता है कि उस शील्ड को रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का पोशन चाहिए होता है। वो पोशन के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन में जाना पड़ता है। और एक नन वाले गेम में जो एक्सप्लेन किया हैरी ने कि वो नन वाले गेम में हमें एक कोई सा वो मिलेगा, एक पोशन। तो हमें ऐसे धीरे धीरे करके एडवेंचर से पोशन लाने हैं। तो हैरी वही समझाता है ओमिली को कि वो पोशन भाई यार। हाँ, तो हैरी समझाता है ओमिली को कि हमें वही पोशन चाहिए। अरे यार, क्या हो गया भाई? तो हैरी वही बोलता है, तो ओमिली को यही बोलता है। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। Playing a real life horror game. Harry said me, "You are a vampire. Transform in a bat and see what's going on." I turned in a bat and saw the city. Everywhere were monsters. One, one on the top of the hill, on the road, in the shop, killing someone. I could not save the people because vampires only had their teeth to attack, and I don't wanted to bite them. Their blood was disgusting. If those monsters were the last to suck blood on Earth, I'll die blood, but not suck their blood. The monsters were capturing people and turned them in a monster. Cops was firing them with a gun. I don't want her to see it anymore. I went to Harry, but the monster threw a pole at me in the sky. I fell. Ah. I transferred myself into a vampire. The monster scared and ran. I flew back to the mansion and said, "Harry, I am ready." I was very scared that time because the real life evil night I needed to play. I never did daring like that. So go to a, I also go to a church, but I never go near a nun because I used to think that nuns are always evil. I still remember my childhood church. There used to be an old greasy wrinkled grey-haired nun. Her name was Sister Mary. People said that she is very lovely. I used to scare from her. I was staring at her when we were doing our prayer. My mom, oh, I should not take a name. I was just thinking that this is a real life, even none with harm. I wanted to see my brother. Harry, I turned. Can I go to see my brother? I asked. Absolutely, he said. I transformed in a bat and went out the street. The street was full of monsters. The apocalypse was terrible. I can't even seem that I would fear such an apocalypse. तो वो नन वो नन के पास अब होमिली और हैरी को जाना था ताकि वो एक पोर्शन का वो ऑब्टेन कर पाए, जिससे वो क्या बोलते हैं, हाँ, जिससे वो शील्ड को रिपेयर कर पाए, उसका एक पार्ट। अब ये लास्ट पैराग्राफ में होमिली अपने भाई से मिलने जाता है क्योंकि वो वैम्पायर में बदल गया, तो बैटमैन के वहाँ जाता है उसके भाई के पास। I flew towards the hospital and went on floor 5. My brother's bed was surrounded by monsters. I knew that I almost killed my brother, but he is alive. I don't want him to die through monsters. My brother was creeping upon the edge of the bed. A monster was crawling towards him.
I jumped down and bit the monster and made everyone run. My brother looked at me furiously and said, "A vampire who wanted to kill me saved me today." I rubbed his head, turned into a bat and flew away. और चैप्टर खत्म। तो जो फैमिली अपने भाई के पास जाता है, वहां पे उसके भाई वो मॉन्स्टर हंट कर रहे होते हैं, तो वो उस मॉन्स्टर को ही खत्म करने होता है और बिना कुछ बोले वो बस अपने भाई के हेयर को रब करते हो जाता है। कुछ इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब चैप्टर 9 छोटा सा है, ये भी खत्म कर। This is my day of writing chapter 9, 25 March 2024. ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी ये स्टोरी और भाई एपिक है। I was very scared of writing the nun part, but I have mentioned the series of situations which I need to do. My description of the apocalypse was horrible. The thing is that if we eat an apple, we need to finish it, or if we play football, and if it rains, so we need to decide the winner. Same way if I describe the part of a story, so I need to complete it. The main point of the story is that how a vampire, a monster stopped a monster apocalypse. Everything in this universe have infinite possibilities. This story means after chapter 9, it will seem like complex possibility. I meant to say that like a ball went in a goal post. It will have so many possibilities. Like how is it gold? How is it brought till goal? Which team scored the goal? Same way some description you will think that this part would be the next chapter's description. Like a confusion. If I stole anything, my brother, my mom, and I am blamed, which is called confusing. Like if I stole something, why is my mom and my brother blamed? It will be fun to read the next chapter. This book might contain 25 chapters. Okay, this was my feeling of scare and horror. ये just as a present time चैप्टर है जिसमें मैंने लिखा है कि आप इस चैप्टर के बाद जो भी इस चैप्टर के बाद जो भी पढ़ोगे, मतलब वो क्योंकि वो नन पार्ट अगर वायलेंट भला ही हुआ, पर क्योंकि मैंने लिखा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको आपको एंड करना पड़ता है। वो मुझे भी ये स्टोरी एंड करने के लिए वो नन वाला, मतलब जो आगे का जो भी सब होगा वो लिखना पड़ेगा और इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ चीजें होंगी। तो 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 कंफ्यूजन होगा, तो वही बात है, कंफ्यूजन होगा तो आगे के चैप्टर्स में वही होगा। शायद मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर का टाइम नहीं है क्योंकि चैप्टर 10 कितना बड़ा है भाई। चैप्टर 10 बड़ा है, फिर 11 छोटा ही है। हाँ 11 छोटा ही, 11 तक मान लो, फिर 12 तो हाँ 12 भी ठीक ठाक, मतलब बड़ा नहीं 12 भी बड़ा है। 13 समझ रहे हो, इतना मतलब बड़ी चीजें नहीं है।
तो हम कौन से चैप्टर पे एंड कर रहे हैं? हम चैप्टर 9 खत्म किया है हमने, तो अब चैप्टर 10 से हमें कंटिन्यू करना है। और चैप्टर 10 के लिए एक्साइटेड होने चाहिए आप, because it is the actual part of the adventure, actual part of the book where Homini starts the adventure. और जैसा मैंने बोला, मुझे बुक खत्म करनी है, शुरू किया है तो खत्म भी करना है। तो क्या, तो आज की वीडियो कैसी लगी है? मोमेंट मतलब हैंड रिटन स्टोरी राइट, अच्छी लगी तो बताना। और मुझे नहीं पता मैं ये कब तक कर पाऊंगा, मेरे वर्ड एक्सपायर होने वाला है, वर्ड का लाइसेंस तो पता नहीं, पर हाँ ये आएगी तो आई एम श्योर। तो इफ यू गाइस लाइक दिस स्टोरी, प्लीज बोलना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में प्रिडिक्ट करना कि आगे स्टोरी में क्या होगा। एंड यस गाइस, बाय बाय।